Hello everyone, we are here with another video where we'll be talking about the top 10 private law colleges that we cater and we should go for if you have not cleared your CLAT and AILET examination. या फिर अगर आप अगले साल के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो while you're preparing for your CLAT and AILET preparation. So what are the top 10 private law colleges that you can go for is Jindal Global Law School, which is there in Sonipat, and it is majorly it takes admission through LNAT UK. So when you see इसका एग्जाम अलग होता है, it is not CLAT and AILET के स्कोर के बेसिस पे नहीं लेता है. तो LNAT UK इसके अंदर BLLB ऑनर्स है, BBLLB ऑनर्स है, BCom LLB है, then 3-year LLB प्रोग्राम भी है, LLM भी है, and then PhD भी है. The seat intake would be 300 for BLLB, BBLLB के लिए 300 है, BCom LLB के लिए 300 है, right? Then what would be the fees? थोड़ा expensive level of fees चला जाता है, that is 6.25 lakh per year, that is a tuition fees. अगर आप residential लेते हो तो 3.10 lakh per year, that is for the residential purpose, and then total is 9.35 lakh per year. ठीक है. कैंपस एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट्स 80 एकर्स, एंड देन मेजर अगर आपको लग रहा है कि अगर आप आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन आप कुछ और भी करना चाहते हो तो आप इसी कैंपस से कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मेजर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, IPR, इन सब के ऊपर आप इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव दीज आर सम ऑफ द इमेजेस ऑफ OP जिंदल कैंपस. देन वी हैव SLS पुणे. So yes, SLS Pune का admission होता है through SLAT, Symbiosis Law Admission Test. There are 3 exams when you talk about which happens in the month of December. So there are 3 exams that happen: CLAT, and then AILET, and then SLAT. So these are the 3 exams that happens in the month of December. But SLS Pune takes admission through SLAT. ठीक है, ये this does not cater about CLAT and AILET scores. Then what all are the courses that they offer is BLLB and BBLLB honors. Then LLB, 3-year LLB and LLM programs are the extra courses that they offer. BLLB में they have 120 seats, BBLLB 180, LLB is for 60 if you are considering 3-year LLB as well. This is the fees, 4.15 lakh plus 20,000 deposit. So this is majorly the fees that they cater. Campus area अगर मैं बात करूँ तो approximately 5 acres. But the campus is really big. उसके अंदर और भी बहुत सारे buildings हैं. तो management का building भी है and everything. So then you can cater business law, constitutional law, international law में भी, right? अगर आप specialization करने का सोच रहे हो. These are the campus photos. Then we have BITS Law School. So yes, बढ़िया campus है, ठीक है. Recently launch हुआ था BITS Law School. इसके अंदर you have एक entrance exam है, BITS Law examination test. But एक CLAT, SLAT, LNAT इन सब के entrance course के basis पे भी ले लेता है, ठीक है. BLLB ऑफर करता है, BLLB भी करता है, BBLLB करता है, LLB करता है. And these are the seats, 120 and 60 are the seats. For BLLB they give 120 seats, for BBLLB they give 60 seats. Tuition fees की अगर मैं बात करूँ 737 थोड़ा higher end पे ही है, ठीक है. And then the residential area as well. Approximately 5 acres का campus है. Major specialization अगर आपका करने का मन करे after your undergraduation is done, then you go for business law, constitutional law, international law, right? Then this is the image of the BITS Law School. Then you can go for Nirma. Nirma is one of the universities जो कहीं ना कहीं CLAT ranks के basis पे आपको लेती है, जो कि 3K से 6K के बीच में होती है. So if your rank somewhere lies here, तो आपको Nirma मिलना is the easiest target, right? Offers BLLB honors, BCom LLB honors offer करता है. Seat intake से is 120, BCom LLB के लिए 120 seats are available. Then 2 lakh per year is the fees. थोड़ा सा lower end पे है, similar to what NLU's charges, ठीक है. Approximately 115 acres का इसका campus है. Major specialization अगर आप undergraduate के बाद करना चाहते हो तो constitutional law, criminal law and corporate law are the 3 major specialization तो ये देता है.
निर्मा अहमदाबाद कैंपस की कुछ पिक्चर्स. देन वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टेक एग्जाम, मतलब अब वो क्यूली के थ्रू आपका एंट्रेंस लेता है, ठीक है. दे डोंट सी द क्लास स्कोर एंड एनीथिंग, दे गो फॉर द क्यूली एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है. मेजरली बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस के हम बारे में बात करेंगे वो दिसंबर के बाद होते हैं, तो जनवरी से जून का एक जो एरिया होता है तब वो एग्जाम्स होता है, ठीक है. कोर्सेज BLLB, BBLLB, ऑनर्स दैट दे ऑफर, सीट इनटेक वैरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. इसकी फीस सर्टेनली सिमिलर है व्हाट NLU चार्जेस, तो वो आप देख सकते हो. प्लस डिपेंडिंग ऑन डोमिसाइल ऑल्सो वर्क्स. सो अप्रॉक्सीमेटली 25 एकर्स का इसका कैंपस है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो क्यूली जो एग्जाम है और भी कैंपसेस हैं फॉर क्राइस्ट, तो उसके लिए भी लेता है एडमिशन. बट बेंगलुरु इज बीइंग द बेस्ट अमंग द ऑल. बेंगलुरु में ऑल्सो दे हैव 2 campuses. So the older one. Okay. Then Christ Bangalore pictures. And then we have School of Law UPS Dehradun. So yes, UPS Dehradun is one of the good colleges and under private law universities. They take admission through ULSAT and CLAT. So ULSAT is basically an examination for UPS Dehradun University themselves, but majorly वो CLAT score के basis पे भी लेते हैं, ठीक है. एनर्जी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ मेजर स्पेशलाइजेशन है. BLLB के ऊपर सीट्स हैं इनके पास 240. इनकी ट्यूशन फीस is certainly 21.19 lakh for 5 years. So this is certainly around 30 lakhs for 5 years, which is the dual amount of what we pay for NLUs. ठीक है. So BLLB honors and BBLLB honors are actually the programs that they offer us. Approximately अगर मैं इसकी campus area की बात करूँ तो it's a 44 acres campus arena. Okay. So major specialization you can do is energy law for sure. UPS is Universal Petroleum University. So yes, energy law अगर आपको चाहिए, अगर आप सोचते हो UG के बाद कि आप कुछ ना कुछ energy law में कर सकते हो, तो this is one of the best universities you can go to. Then you have corporate law and then international law as well. UPS Dehradun का campus pictures. Then NMIMS. So it is for Mumbai. So we have a lot of campuses for Kirat P. Mehta. The major name of the campus is Kirat P. Mehta Law School. But then हम NMIMS बोलते हैं. So NLAT करके एक एग्जाम होता है, NMIMS LAT स्कोर के बेसिस पे दे टेक द एडमिशन, और इसका विंडो कुछ 1 महीने के लिए खुला होता है टू गिव द एग्जामिनेशंस. क्लास स्कोर के बेसिस पे ऑल्सो दे टेक. BLLB honors, BBLLB honors is the major things that they go for. The best campus being the Mumbai is one of the campuses. They also have 7-8 campuses for law. Varies program wise, and then they have 180 seats for BLLB. BBLLB के लिए 120 seats available है उनके पास. Then campus area नहीं दिया है as such. Corporate law, intellectual property rights, international law are the major things that you can go for the specialization. And MS Mumbai की campus pictures. Then Bennett Law School. When we can talk about Bennett Law School as well. Bennett takes CLAT और CUT के scores, then BLLB honors, BBLLB honors offer करता है. Seat intakes vary है. कहीं ना कहीं tuition fees थोड़ी सी ज़्यादा है NLU से, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, और which includes hostel as well. Corporate law, criminal law, dispute resolution, insolvency law के ऊपर ये major specialization देता है. Campus area is certainly around 91 acres. This is the image of Bennett Law School. Then we have BML Munjal Law School, and it offers BLLB honors for UG, LLB for PG. Then we have BLLB में 60, LLB also 60. Fees इसकी 3,70,000 plus hostel charges. So yes, then we have 50 acres में इसका land. Then you can go for CLAT. अगर आप CLAT लिख रहे हो, LAT लिख रहे हो, तो उस पर भी मिल जाएगा. BMU, SAT पे भी you will get the admission as such. Then major specialization in corporate law, criminal law, constitutional law. Then you can see the image of BML Munjal. Then we have KIIT Law School, which is in Bhubaneswar. इसका KIIT law करके examination होता है. You can go and give it if you really want to go. Then we have BLLB honors, BBLLB honors, BSc LLB honors. These are the 3 major programs that they give. Then seat intakes is for BLLB is 180. कहीं ना कहीं 15 lakh is for 5 years. Certainly similar amount what NLUs charges us. So yes, approximately 700 acres का इनका campus है. Major specialization would be constitutional law, business law, intellectual law, criminal law, IPR, and taxation law. Moving ahead, these are the pictures for the KIT Law School, Bhubaneswar.
So yes, this was the top 10 private law colleges that you can see other than CLAT and AILET, and give the examination and go and get into college. So this is it from my end, and bye bye. Take care, students. All the best.